Yash is a good boy. This is a sentence. और जो पहले लिखते हैं वो कैपिटल लेटर मीन्स बड़ा होना चाहिए और जो लास्ट को होता है उसमें फुल स्टॉप आनी चाहिए. वो सेंटेंस वो होता है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन्स जैसे कि ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये सारे वर्ड है और ग्रुप ऑफ वर्ड क्या बनाता है? सेंटेंस. जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में तो वो क्या बनाते हैं? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास. ठीक है, ऐसे ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या बनाता है? सेंटेंस. सेंटेंस मीन्स द ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स called sentence. that make complete sense. जो complete लाइन बनाए, complete सेंस बनाए उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that make अच्छा बटरफ्लाई का काम करोगे पैसा मिलता लो complete बटरफ्लाई का पेन का sense. इसको सेंटेंस समझ में आ गया? यस. अब हम ये लिखते हैं जैसे तुम कुछ सेंटेंस लिखो और उनका फर्स्ट लेटर जो स्टार्टिंग होता है वो कैपिटल होना चाहिए और जो लास्ट होता है जो जब अपने लाइन खत्म हो जाती है तो फुल स्टॉप. तो तुमने भी ऐसी लेटर लिखनी है. जैसे कि मैंने लिखा Is this a sentence? No. No. And we have to make this complete sense. How you make this? Tell me. This is incomplete sense. Jumbled sentence. Then we have to write correct sentence. Mango is a fruit. See. First capital letter and after the line will be stop and we have to put full stop. Sentence. Now this is the jumbled sentence. Jumbled sentence. This is not a sentence and we have corrected. Now this is a sentence. Now